Hello, my dear viewers, my dear listeners. I hope you're doing well. उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने मेरे previous videos, you might have seen my previous lectures and my previous videos. So once again, I'm here. So I have brought something fishy. मैं कुछ खास चीज लाया हूँ इस वीडियो में. हम डिस्कस करने जा रहे हैं how plus adjective. How plus adjective, इसके functions और इसके इस्तेमाल. ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं how plus adjective के हम कैसे ये spoken language में इस्तेमाल कर सकते हैं. How plus adjective. how के बाद जब भी हम adjective लगाए, ठीक है, मुख्तलिफ adjectives हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो मुख्तलिफ functions, मुख्तलिफ usage के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि अगर मैं कहूँ how much, ठीक, how much, हाँ हमारे पास WH वर्ड, much हमारे पास क्या है, adjective है. जब भी adjective से पहले how लगाया जाए तो ये हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको कहा जाता है WH phrase or information question phrase. What is how much? How much is an information question phrase used to ask about the quantity of uncountable noun. जब भी हम quantity के बारे में पूछना चाहते हैं, quantity uncountable noun के, तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं how much. How much is used to talk about, or it is used to ask about the quantity of uncountable nouns. Uncountable nouns. ठीक है? Quantity of uncountable nouns. For example, how much water do you drink? How much water do you drink? Or how much does it cost? How much does it cost? Or how much is it? Or how much do you have? Hey, excuse me, how much do you have? How much do you have? Or how much sugar do you want to buy? Let's suppose right now we are in the city, okay, and I'm with my friends. If you want to buy something, he's telling me that I want to buy sugar. So definitely I ask him that how much sugar do you want to buy? It is all about how much. How much हम इस्तेमाल करते हैं quantity of uncountable noun. How much water do you drink? Or how much does it cost? इसका क्या कीमत है? Or how much is it? Okay. अभी मैं shopkeeper के साथ having conversation with shopkeeper. Okay, and I need to buy this marker. So definitely I can ask him that. Excuse me, sir, how much is it? Spoken में तो हम इस तरह कहते हैं. How much is it? ठीक है? Or hey, how much do you have? Correct? Okay. How plus adjective. हमारे पास एक और है. वो है how many. How many. ठीक. How many हम इस्तेमाल करते हैं. How many is also information question phrase used to ask about the number of countable nouns. जब हम नंबर के बारे में पूछते हैं, तादाद के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, number of countable nouns. For example, how many brothers do you have? How many brothers do you have? How many brothers? Look here. How many? According to grammar, it is a WH or information question phrase used to ask about the number of countable nouns. Brothers हमारे पास क्या है? Countable है ना? Or for example, how many markers do you have? Or how many students are there in your class? How many rooms are there in your school? जब भी आप countable नाउन की तादाद मालूम करना चाहते हैं तो ठीक है,
काउंटेबल नाउन के नंबर के बारे में पूछते हैं नंबर, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ मैनी। गॉट इट? अच्छा जी, तो चलिए आते हैं एक और हाउ प्लस एडजेक्टिव की तरफ। अच्छा जी, जब भी हम लंबाई के बारे में पूछते हैं, चौड़ाई के बारे में पूछते हैं, गहराई के बारे में पूछते हैं या ऊंचाई के बारे में पूछते हैं, तो हम लगाते हैं क्या? हाउ प्लस एडजेक्टिव। तो चलिए आते हैं पहले हाउ वाइड। हाउ वाइड, हाउ वाइड जब भी हम पूछते हैं वर्थ के बारे में, ऑफ एनीथिंग, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, how wide is this room? Hey, excuse me, how wide is this room? How wide is this room? Got it? Or how wide is this road? ये हम पूछते हैं चौड़ाई के बारे में। जब भी आप चौड़ाई के बारे में पूछना चाहते हैं तो फिर हम लगाते हैं how wide, ठीक है? अच्छा, अगर मैं गहराई के बारे में पूछना चाहता हूं तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? हाउ डीप। क्या लगाऊंगा? हाउ डीप। हाउ डीप is a WH or information question phrase used to ask about depth. गहराई के बारे में पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डीप इज दिस pool? Or how deep is this well? How deep is this dam? How deep is this spring? Got it? Okay. अगर मैं ऊंचाई के बारे में पूछना चाहता हूं तो फिर मैं कैसे कहूंगा? How high. ये हम पूछते हैं used to ask about height, जब भी हम height के बारे में पूछते हैं, ठीक है? For example, how high is this building? Or how high is this room? How high is this building? Or how high is this room? Got it? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर चौड़ाई के बारे में पूछता हूँ, अगर लंबाई के बारे में पूछना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? हाउ के बाद मुझे लगाना चाहिए लॉन्ग। हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हमारे पास क्या है? How long भी हमारे पास information question phrase how long, ठीक? It is used for two things. Number one, length, and number second, duration of action. Duration of an action. ओके, ये हम दो चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया लेंथ और दूसरा क्या हो गया? ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है? ओके, लेंथ के बारे में, फॉर एग्जांपल, हाउ लॉन्ग इज दिस रोड? हे, एक्सक्यूज मी, हाउ लॉन्ग इज दिस रोड? अगर मैं ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन के बारे में पूछना चाहता हूं, ठीक है, तो कैसे? लेट्स गो। हे, डू यू स्टडी tomorrow? Yes, I do. So, how long do you study? How long do you study? मतलब ये है कि एक्शन का ड्यूरेशन मुझे बताएं, ठीक है? How long do you study? How long do you study? यहाँ मैंने do लगाया क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात करना चाहता हूँ। If I talk about the past, so okay, I'll change the word do into that. How long did you study last night? If I talk about the future, okay, or duration of an action, so definitely I could say that how long will you study tonight? Or how long will you stay there? Okay, perfect. में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। How long have you been here? How long have you been a teacher? Got it? Okay, अगर repetition of an action की बात की जाए, repetition of an action, ठीक है?
रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन, फॉर एग्जाम्पल आप दिन में कितने नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, या कितने बार आप खाना खाते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ के बाद हम लगाते हैं often, हाउ often, ठीक है, like here how often. Usually people pronounce this word like often. Both are right. Okay, often or often. Got it? How often? How often ये हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब भी हम पूछते हैं repetition of an action. Repetition of an action. जब भी हम एक एक्शन के रिपीटिशन के बारे में पूछना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली क्या लगाऊंगा? How often. ठीक है? Let's suppose how often do you perform prayer? Hey, how often do you perform prayer? Or another example, let me write here. How often do you eat the meal? How often do you eat the meal? Twice a day. How often do you brush your teeth? Twice a day. How often do you wash your bike? How often do you wash your car? Got it? How often हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? Repetition of an action के लिए, ठीक है? ये हो गया repetition of an action. अगर मैं distance के हवाले से पूछना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? How के बाद क्या लगाऊंगा? Far. How far? Okay. Used to ask about distance. जब भी आप distance के बारे में पूछना चाहते हैं, ठीक है? For example, how far is it from? How far is it from Peshawar to Islamabad? Hey, excuse me, how far is it from Peshawar to Islamabad? Or how far is it to your school? How far is it from Islamabad to Karachi? So guys, it's all about this, and I hope you might have enjoyed it, and I hope you might have learned something. So just keep on practicing, keep on learning. So we are all here to learn, to improve our English. Wish you all the best. See you.